Hello students, how are you? We are good. Okay, what chapter we are going to study? Electricity. Okay, So, can you explain us the very basics of it? okay, so you need to go right from the scratch. Okay, I will tell that when you are going to study electricity, first you should understand the concept of electron, protons, charges, etc. See, everything in this universe is ultimately made up of atoms. And every atom is made up of two very significant charges. Suppose I am making an atomic model, say for example, of sodium. So it contains 11 proton in its nucleus and 12 neutrons. That is insignificant. The neutron is insignificant in this discussion. 11 protons, and then it contains 11 electrons as well. 2 here, 8 here, and one more. That means it totally contains 11 electrons. 11 electrons. This atom contains 11 electrons. Now, the electron and protons are very significant things when we talk about electricity. One electron has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. I'll write it C, coulombs. And one proton has a charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Now you may ask, what is the difference? The difference is that the charge on one electron, we consider it a negative, and the charge on one proton, we tell it positive, because both the charges are opposite nature. How did people come to know about the opposite nature? Is by studying the properties of charges. Like charges will repel each other, unlike charges or opposite charges will attract each other. So that means here you have to know a proton will attract an electron, and a proton will repel another proton, an electron will repel another electron. So this is the first thing. Firstly, you should understand about the structure of an atom. Therefore, you can understand the structure of many things around the universe. Like sodium is a metal. So most of the metals will contain electrons and protons, and their outermost electrons are loosely held. That also we have to understand. So now here, first thing we understand that what are the other things we should know about electron and proton. Number one, we should try to give a symbol to these. The charge carried by one electron or one proton, we will tell as E. And E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. This is the magnitude. What is this? This is the magnitude of charge carried by either one proton or one electron. But we put the symbol E. Now, where did the plus or minus go? Can you tell? Proton plus and electron minus, but we are not giving any plus minus sign. Why? Because this is the magnitude of charge. But the sign of a charge, whether positive or negative adya, will be given by your Sugandha, will be given by you. Suppose I tell you what is the charge on 10 electrons. Then what you will do? You will, since one electron has this many charge, so for 10 electrons, you will write charge in coulombs. 10 electrons, I am writing 10 electrons. So 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19, but there will be a negative over here. This negative you have to understand, because I asked charge on one electron. So after multiplying and getting the result, you will write down what? Negative sign, and then you do the further calculation. Then charge on one, I suppose I tell you charge on 20 protons. So 20, suppose I put E over here, P over here. So 20 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. So this now proton is what? Positively charged. So the plus,
Whether you give or not give, you know that a plus is there. If you don't put any sign, that means plus is there. So positive charge. So now try to find out. This is what I asked. I gave you this number. What is the charge on 20 protons? And this you already know as E. And what is Q? Q is charge in coulombs carried by a given number of protons or electrons. So we develop a formula. We develop a formula that is Q is equal to Ne. Suppose I elaborate it. So charge in coulombs, if the number is given, number of protons or electrons is given. So charge in coulombs is equal to number of proton or electron slash into E. E means what? 1.6 into 10 to the power minus 19. So this is there. Now this is not the total answer. The total answer is plus or minus also has to be put. So if I ask you proton, what will you put as the sign? Positive. And if I ask you electrons, then what sign you will put? Negative. But here also one more thing is there, that now we are talking about charge. Now charge, how a charge is given to a body? Charge is given to a body either by giving it more electron or removing electron. Protons never get transferred. So a body gets charged when a body gets charged when either it loses or gains electron. So then only it will get charged. All right. And then it becomes ions also. It is also called ion. The positive charge ions are called cations and the negative charge ions are called anions. Now, if a body is positively charged or negatively charged, it is important to remember that if there is a body which is negatively charged, that doesn't mean it is made up of only electrons. No, it can be made up of electrons or protons both, but it is negatively charged means it contains more electrons. And if it is positively charged, it contains less electrons, more protons. That is the thing which we have to remember. That means body can be charged in many ways now. That also we should know. Suppose it can be charged by friction, it can be charged by chemical reaction, it can be charged by sometimes heating, it can be charged use of solar energy. Many ways we can charge bodies. All right. So here we have understood more or less about charge in coulombs. Now one question, suppose I ask, what will be the charge on a body which has lost 10 to the power 20 electrons. Second, which has gained which has gained 10 to the power 21 electrons. Now see how it goes. We have to be careful. It has lost or gained. So first forget about lost and gain. Suppose I take question A. This is A. So straight away I'll write the formula 1A, and then what I will do? Q is equal to Ne. What is the value of N I will take? Tell loudly. What is the value of N I will take over here? 10 to the power? Say loudly. 10 to the power 20 electrons. This is the number of, what to say? The number of electrons this body has lost, and 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now minus 19 and plus 20. That means only 10 will remain. 20 here, 10 into 10 to the power 20 and 10 to the power minus 19. If we operate it, it will become 10 to the power 1. And if I multiply 10 to the power 1 with 1.6, then it will be 16 coulombs. Now you have to think about sign. So what is the sign? It has lost electrons. So lost electron means what? It will become? No, it will become positive charge. It will become positive charge because the electron itself is negative. Now why it happens? Good that you asked me a question and good that you gave the incorrect answer. Sometimes it is clear to understand this way.
any neutral body will contain same number of electrons and protons. Any neutral body will contain same number of electrons or protons. For example, suppose a body contains, suppose in a family, there are 4 girls and 4 boys, always equal number. So if one girl goes out, which exceeds? Boys exceed. Therefore, if electron goes out, which is the negative charge, so which will exceed? Proton. That means body will get what? Positively charged. The body will get positively charged. Remember, electron is a negatively charged particle. So if it goes away from a neutral body, the body becomes positively charged. Now simply again, 4 girls and 4 boys are there. One more girl comes in. Then what will happen? The body will become negatively charged, because girl now here is symbolic of what? The negative electron. All right, did you understand? So forget once more, there are 4 electrons and 4 protons in a house. One more electron comes, then what will happen? The house will become negatively charged. So same way, now B में कह रहा it has gained electrons. It has gained electrons. Let us see how many electrons. So 10 to the power 21 into 1.6 into 10 to the power minus 19. Now this becomes 21 and 19. That means 10 to the power 2. That is 100 is left. 100 into 1.6 is how much? 160 coulombs. But it has gained electrons. So what you will put? Minus. So did you understand this? That electron lost or gained. If electron is lost, when you calculate finally, you will put a positive charge. If electron is gained and you calculate, then you put a negative charge. Did you understand till here? Now we go to the next one. Okay. So here we have understood. Now how do we charge a body, or how current is generated? Somewhere we have to understand. All right. Somewhere we have to understand. This is a very basic part. I am not explaining potential difference, anything else. I first want to tell you how current flows in simplest form, how it was discovered, how it was made. I'll try to tell you. So here I come to a particular device called simple voltaic cell. Here what will happen? You put in sulfuric acid in a jar and you have 2 plates. Sulfuric acid in a jar and you have 2 plates. All right. One is the zinc plate and another is the copper plate. All right, and there something is there over here and you cover it up. This black things are, this is the liquid inside, which is sulfuric acid, H2SO4. All right, sulfuric acid. And then there is a zinc plate and a copper plate. So very easily now you'll understand how electricity flow. क्यों, कैसे पहला दुनिया का सबसे पहला जो भी बैटरी बना होगा, सेल बना होगा, सेल एक्चुअल में जो भी सेल बना होगा, तो कैसे ऑपरेट, पहला बिजली कैसे हुआ होगा, बिजली किसको कहते हैं, लेट अस सी. सबसे पहले आप लोग अभी भी यह अंडरस्टूड, यह आपने पढ़ा है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में कि एसिड है, एसिड डिसोसिएट करता है. तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड विल डिसोसिएट, H2SO4 डिसोसिएट करता है. थोड़ा सा किसी को याद है क्या क्या चीज में डिसोसिएट करेगा, H2SO4 क्या क्या में डिसोसिएट करेगा, याद कीजिए. जैसे HCl डिसोसिएट करता है, टूटता है H प्लस और Cl माइनस में. H2SO4 क्या होता है, H प्लस और SO4 माइनस माइनस में, दो डबल उसमें इसका वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है. सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, यानी 2 नेगेटिव चार्ज, और इसका वैलेंसी 1 होता है. लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर एक अभी आयन दिखाएं, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. वेरी गुड अलंकृत, समझ रहे हैं इसको. यानी ये जब भी हम पानी में कहीं पर भी सल्फ्यूरिक एसिड रखते हैं एक बीकर में, वो टूटा रहेगा, हमेशा डिसोसिएटेड रहेगा. अब उसमें हम क्या किए, ऊपर से एक प्लेट 2 डाल दिए, कॉपर प्लेट और जिंक प्लेट. अब जब आप जाइएगा तो जब आप मेटल नॉन मेटल का पढ़ाई कर रहे थे तो वहां सीखे हैं कि कॉपर जो है बहुत नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में.
तो होता क्या है, एट कॉपर प्लेट क्या होगा, एट Cu प्लेट व्हाट विल हैपन, देखिए Cu प्लेट में क्या होगा, H प्लस आयन कॉपर प्लेट के पास जाएगा और H प्लस आयन कॉपर प्लेट के पास जाएगा और वो कॉपर का, चूंकि वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है इन टर्म्स ऑफ व्हाट टू से इलेक्ट्रॉन गेन, तो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा उसका और ये बना लेगा कॉपर को का इलेक्ट्रॉन छीन के खुद न्यूट्रलाइज होगा। H प्लस मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, ध्यान से सोचो, H प्लस मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन जाने पर इस पर क्या गया, पॉजिटिव, फिर दो है तो एक और छीन लिया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कॉपर प्लेट हैज कम टू अ पॉजिटिव पोटेंशियल। याद रखें यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल, और पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अब स्केर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पूरे कॉपर प्लेट पर अब जो है आपको, पूरे कॉपर प्लेट पर अब आपको जो है प्लस चार्ज आ गया, पूरे कॉपर प्लेट पर प्लस चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, यानी द कॉपर प्लेट हैज कम टू अ हाई पोटेंशियल, वी से जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी उसको क्या कहते हैं, हाई पोटेंशियल प्लेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस कॉपर प्लेट हैज कम टू हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल है ना, कॉपर प्लेट हैज कम टू हाई पोटेंशियल, हो गया, डिड यू अंडरस्टैंड। अब क्या होगा, सल्फेट बाय नेचर विल गो टू द, सल्फेट बाय नेचर विल गो टू द जिंक प्लेट, ऑलराइट, sulfate by nature will go to the zinc plate. Now what will happen, let us see, now what will happen, the sulfate will go to zinc plate। अब यहां पर देखो बच्चों, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन वहां दे देता है, न्यूट्रलाइज कर जाता है जिंक, और जिंक के साथ जिंक सल्फेट बना देता है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उड़ जाता है और ये उसके प्लेट पर जाके ठहर जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड, दैट मींस अब यहां पर आप जो दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन को हम कर देते हैं नॉर्मली लेट अस सी वायलेट कलर, ऑलराइट, तो यहां पर अब क्या है, अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, जिंक प्लेट अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जहां पर अबंडेंस है इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से लो पोटेंशियल आएगा, कंपैरेटिव अगर कहें, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब लो पोटेंशियल, कम इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे तो जहां कम है वो हाई पोटेंशियल, जहां ज्यादा है लो पोटेंशियल, ज्यादा प्रोटॉन मतलब तो वेरी हाई पोटेंशियल, आर यू फॉलोइंग, डिड यू अंडरस्टैंड। तो अब क्या हो गया, यहां पर हमारे पास जिंक सल्फेट में जो ये प्लेट है, ये प्लेट जो है, जो जिंक प्लेट था, जिंक प्लेट इज एट लो पोटेंशियल, जिंक प्लेट इज एट लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लो पोटेंशियल इज लो, मतलब लो पोटेंशियल पर हो गया। अब सोचो यहां पर अगर देख रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, कॉपर प्लेट के पास इलेक्ट्रॉन कम है, नहीं है, यानी दूसरे शब्दों में इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, कॉपर प्लेट हैज गॉट स्केर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिवली चार्ज है। आप सेल अपना देखते हैं प्लस लिखा रहता है, कभी कभी कोई बैटरी का रिमोट में प्लस लिखा रहता है और नीचे में क्या लिखा था, माइनस, यानी वो यही साइन दिखा रहा है। ये दुनिया का सबसे पहला सेल था और वो एडवांस होते होते ये जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं, यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट यूज किए लिक्विड है, धीरे धीरे सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यूज करने पड़ा या सेमी सॉलिड यूज हुआ, ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड। अब गौर से देखिए इसको, तो ये हो गया। अब जिंक प्लेट के पास क्या है, अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिंक प्लेट का कैसा पोटेंशियल पर आ गया, लो पोटेंशियल। अब यानी आपने क्या किया, ध्यान से समझिए, आपने एक तरफ बॉयज का हॉस्टल खोल दिया और एक तरफ गर्ल्स हॉस्टल खोल दिया, ठीक है, या दूसरे शब्दों में देखिए, एक तरफ आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का खोल दिया और एक तरफ बेरोजगार लोग को रख दिया। यानी अब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और बेरोजगार लोग एक तरफ, यानी क्या अट्रैक्शन किसका किसके तरफ होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ कौन जाने मांगेगा, बेरोजगार लोग, टू गेट एम्प्लॉयड। तो कहने का मतलब क्या, इन दोनों के बीच अपोजिट अर्ज है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चाह रहा है कि हम अगर बेरोजगार लोग उसको खींच ले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपोजिटली नेचर है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले, ठीक है। कोई भी जगह में याद रखना, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन नहीं मूव करेगा, यानी प्रोटॉन खींच लेगा, यानी पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगेगा।
तो हर एक बैटरी में वही सिस्टम है। इसमें देखिए यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। हर एक सेल में, आई एम सॉरी, हर एक सेल में जो है प्लस और माइनस लिखा हुआ। प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल। प्लस का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन कम ही है, वो पॉजिटिवली चार्ज एरिया है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो नेगेटिवली चार्ज एरिया है। यानी यहां पर और जो भी गाना बनता है वो फिजिक्स के टीचर बनाए हैं। अभी क्या है, जब ऐसे तो अभी रुकी रुकी सी जिंदगी है, कुछ नहीं हो रहा है। चार्ज एट रेस्ट बट रेडी टू मूव, एकदम ऐसे है। जैसे ही हम से फॉर एग्जांपल सचमुच इधर उधर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है और इधर में बेरोजगार लोग हैं, लेकिन बीच में नदी है, तब तो नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उसको कनेक्ट कर देंगे पुल से, तो व्हाट विल हैपन? यस, फर्स्टली द बेरोजगार लोग पुल से कहां जाएगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ। यानी जो पुल है वो कहा एक कंडक्टर है, वहां उसको अलाउ कर रहा है किसको फ्लो करने के लिए, है ना, अनएम्प्लॉयड लोग को। यहां पर ये तार है, जो अगर प्लास्टिक का रहेगा तो गड़बड़ है, प्लास्टिक नहीं अलाउ करेगा इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर हम जोड़ दें इसको एक तार से, मेटल से, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बहेगा। यानी व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द जिंक प्लेट टू द कॉपर प्लेट। इमेजिन करो ये सब जो है, इमेजिन करो कि तुम वहां एक तो बल्ब लगा दे, तो ये बल्ब क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। क्योंकि क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, और इसी को कहते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग चार्जेस दे कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन बह रहा है, जैसे ही वो मूव करने लगा वो अब क्या हो गया? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी कोई भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स नहीं बताए एक्सेप्ट चार्ज इन कूलम्स का। बट पहले तो ये जानना चाहिए क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी बता, क्यों चलती है पवन? गाना लिखा हो ना, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बहता है? आज घर में जाके बता दीजिए कि भाई सिंपल सा बात है, केमिस्ट्री के सहारे हम एक प्लेट पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करते हैं? प्लस, और दूसरे पर कौन सा करते हैं? माइनस। छोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहता। अभी चार्ज क्या है? रेस्ट। +2 में जाइएगा तो इसको चार्ज एट रेस्ट का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जैसे ही आप उसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? चार्जेस बहने लगता है। चार्ज का मतलब क्या हो गया? मेटल में कौन बहता है? इलेक्ट्रॉन। आप सोचिए, क्या बैटरी में अंदर भी चार्ज बह रहा था? यस, तभी ना सल्फेट यहां आयन था वो टूटा, तो सल्फेट आयन किसके तरफ चला गया? जिंक प्लेट की तरफ। और हाइड्रोजन आयन किसके तरफ चला गया? कॉपर। यानी लिक्विड में आयन बहता, अंदर भी करंट बह रहा है और बाहर भी। लिक्विड में कौन सा कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनता है? मूविंग आयंस क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ऊपर बाहर में मेटल में कैसे बनता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा कैसे बनता है? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। यहां क्या बह रहा है? यहां क्या जमा हुआ? माइनस। ये जो वायलेट कलर क्या है? माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन्स है, यही इलेक्ट्रॉन बह रहा है। और अगर यहां पर देखेंगे तो कौन बह रहा है? क्या बह रहा है अलंकृत? आयंस। ऑलराइट। यानी जैसे ही बैटरी ऑपरेशनल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अंदर भी करंट बहता और बाहर भी करंट बहता। बहुत सिंपल सा सोचो कि यहां पर तो लगातार इलेक्ट्रॉन आते रहेगा ना, तभी ना ये कंटिन्यूस चलेगा। तो जैसे यहां का सल्फेट कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया तो सल्फेट और गया, जिंक सल्फेट बना। और कुछ जब ये पूरा चला जाएगा तो बैटरी क्या हो जाएगा? खत्म, बंद हो जाए। यानी इस तरह के सेल को कहते हैं प्राइमरी सेल। ये सेल एक्चुअली सबसे पहला सेल था, जॉन वोल्टा ने बनाया, और इसको कहते हैं सिंपल वोल्टाइक सेल। डिड यू अंडरस्टैंड? हाई पोटेंशियल मींस मोर प्रोटॉन्स या लेस इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड आद्या। लो पोटेंशियल मींस more electrons and less protons. All right. So copper plate is at high potential and zinc plate is at low potential. The conventional current normally अभी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट किधर से बह रहा है? लो से हाई पोटेंशियल। बट माना जाता है कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी ये क्या चीज का डायरेक्शन दी हम? इलेक्ट्रॉनिक करंट का, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन हमको दिखाना तो हम जस्ट उल्टा दिखा देंगे। दैट करंट फ्लोज फ्रॉम हाई। ये कन्वेंशन है, ये क्या है? कन्वेंशन है। इसी इसका नाम भी क्या है? कन्वेंशनल करंट। इसको बाद में आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम कहते हैं कि पॉजिटिव एंड से कन्वेंशनल करंट बहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट हमेशा किधर से बहता है? नेगेटिव प्लेट से। डिड यू अंडरस्टैंड? यहां पर जो
H2SO4 है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे जैसे दुनिया एडवांस हो, मान लो इसको रखे हुए हैं और इसको अपना मोबाइल में रखेंगे तो पानी तो गिर जाएगा। बैटरी इसी का बना ले तो नहीं काम करेगा। तब क्या क्या ऐसा बैटरी, इसमें क्या विशेष चेंज हुआ है, जो H2SO4 है ना, जो H2SO4 है वो क्या है, वो पेस्ट में NH4Cl के पेस्ट में रहता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, या कुछ और भी नए नए चेंजेस होगा तो होगा। अच्छा, इसका जो रॉड होगा, पॉजिटिव रॉड कार्बन रॉड होगा, नॉट द कॉपर प्लेट, ठीक है, लेकिन ऊपर में ब्रास कैप रहता है। और इसका लेकिन केस जो रहता है वो जिंक ही रहेगा। ऑलराइट, वो जिंक ही रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर? गुड। Take down a few notes on your own. Take this, what to say, the chapter notes on your own. Think what have you learned. पीछे जाते हैं, even solve the numerical. Your time starts now.